Okay, so thank you for joining this call. Okay, so let's dive right into the advanced functions in PySpark. So we will be uploading another file in this warehousing in this workspace. So first I'm going to import library which is PySpark dot SQL, and I'm going to import Import spikes Spark session. session. Mhm. Now using the Spark. different keyword, different variable, I'm going to initiate my object which is the Spark session dot builder Dot builder dot builder dot app app. name and give second app, any app name I'll providing here, dot get or Create. create, and that's it. So I'm going to run this code. So meanwhile I can upload the file which we will be using in this text. I'm going to upload this from my local machine, downloads, student data. Okay, student data, copy path, then capital, and then going to create df equals to spark dot read dot options, make it header equals to true, and then infer schema equals to 2 dot csv, and then address. So after this I'll have to print this statement. So can you see it's showing all the commands, but can you see there is some one glitch? For example, I just give the infer schema with the different name, जो name की spelling है वो different कर देता हूँ, and I'm going to run this code df.show, and now let's print this df.print schema. Mhm. Can you see it's showing all the string? Mm. Why? Because we had seen in the earlier lectures we already created infer schema and made ourselves familiar that this is just treating with all the columns as per their behavior, as per their nature. Mm. If it is integer, it will treat as integer. If it is float, it will be treated as double. It will be string, it will be treating it as string. But here it's still it's true, but नीचे मेरे ये सारे string दिखाई दे रहे हैं. तो स्कीमा गलत लिखा है ना हमने. Yes, and also this question, this is the question. It's not throwing an error on the screen as well. Mm. So this is the glitch. So I'm going to provide proper name here, show, and now I'm going to display schema. Now it's showing proper values, proper जो हमारे functions है. Now one more question. I'm going to revise this part. What is the lit? So lit we had seen. I'm going to revise that lit also. It is for the string operation. Yes. So lit is defined as this control X. Can you see? Mm. This is the definition of lit. This lit is function used to literal. अगर किसी भी कॉलम में हमारे पास सेम वैल्यू हमें क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है, then we will be using this lit. So for this we know we will have to import lit. So spark dot sql
dot functions. I'm going to I'll have to import lit. So what's the responsibility of lit? It's going to, this is useful to one. I'm just making correct. मैंने एक correction क्या किया था last time? मैंने आपको बोला था कि this lit is used for string function and that column col is for integer value. That was Yes. incorrect. So this lit is actually putting constant value in each row. So it's adding a new column with the same value for every row. It's not making any kind of transformation. It's not making anything with the existing row, Mm, existing column itself. It's mm. for new column and putting some constant value for each row. For example, I'm going to use with UMN with column. This is the new column. Okay. With this new column, I'm going to use lit with some 100 value and I want to display this data frame. Can you see this new column is just showing here? No, sorry, I missed it. Why late here? It Uh, is just creating a new column with constant value which just passed here in the 100 in the parenthesis. okay, but we yesterday we discussed it was for string operation, right? No, it yes, it was not the string, but it can add a string as well. Mm-hmm. For example, I just add literal, just adding India Mm-hmm. and New column. display this one. So Okay. now it's adding new column and also showing this value. So So it's text, I mean, a string as well as numeric. yes, and it will enter all the values in each row. Like it will enter the same value in each row. Mm-hmm. Okay. Not any kind of transformation. कोई adding का करना है, कोई Mm-hmm. division करना है. So that's possible in call. Okay. But lit is used to create a new column with the constant value. Either it is integer or is string. Is it correct? Is it Yeah, yeah. okay? So I'm going to add new text here. So for example, column. Let's revise this column as well and find the difference between the lit and column. Why column function is used. Going to add this text here. Call function is used to refer to an existing column. अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है lit and column में difference, so first one lit is for new column, creating new column, but col is for existing column inside the data frame. It Mm-hmm. allows reference a column to perform transformation or computation. जैसे किसी भी मार्क्स में हमें 10 ऐड करना है, किसी की एज में हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, किसी की सेल्स की जीएसटी कैलकुलेट करना है. In that scenario, we will be using COL. Giving an example, df equals to df dot with column and then going to create average and with this average going to create column with the marks. Marks is the column name we had. Divide by column with the total for marks multiplied by 100. Oh, right.
from PySpark dot SQL dot functions to import SQL file. This is adding 10 every time. So Mm-hmm. we had marks here 59, 62. तो ये हो गए 69, 70. What we have done here, we just pick the marks column here using the width column. Mm. Using the COL, we just perform the transformation. What is the transformation here? We Just added putting 10. 10 here. This is the definition of column. तो विद कॉलम के लिए ऐसा कोई इंपोर्ट करने की नेसेसरी नहीं है लाइक वी आर इंपोर्टिंग कॉल और lit. It's just using the data frame as so did you find the difference between call and lit? Yes. So using the column we are finding the difference between the each value. Mm. Okay, so Yeah. now let's filter it out. For example, we are going to filter values. Oops. So what is the oops here? It's just variable. It's Mm. going to filter the courses. The Mm. first filter is df dot course equals to Oops. op Mm. double op, Mm. and second filter is as well as will filter the value df dot marks greater than 50 or let's say 90 and allow me to print oops dot show. So this will be the only rows those are having oops as a course name and marks with greater than 90. Mm. So this is the filter we had seen in the previous code, previous section. Mm. So default is 20 only, right? Once we Yes, are running. yes. Mm. If we want to know, don't want the default one, then I'll show you part. Mm. But count 150 Mm. count value Mm. y dot count 37. Mm. I think we have to write this truncate equal to false. Yeah, if you count, if you type under this count or Control where we are, equal to false. Dot yeah, show 100. yeah, mm, show Right? false.
Here we have all the Mm, 100 rows, mm, correct. top 100. Mm, Let's say we want to display distinct values. Was the question we can see. mm, Oh, distinct values. mm, So I'm going to display df dot left. In the select I'm to display gender dot thing here. So this is showing all the genders. But mm. can you see what kind of error we are facing here? Male because of this space. Yes. So we have to give uh, gender. We have to give like For example, uh, so this is the necessary. We need to perform trim operation. yeah, trim operation. L If you trim. remember in the Power BI, it's very much necessary to apply trim to each column in Mm-hmm. order to apply such, in order to remove uh, white space, trail, and like fourth and behind. Mm-hmm. So this will give complete understanding of the keyword string. It's not uh, it's not going to pass all the white spaces before and after these strings. Mm-hmm. Okay, so I'm not going to display here. Let's say I'm going to use drop duplicate values for this. The Drop duplicate. the operation is function is straightforward. Drop duplicates, and let's say going to use this course, or within the course gender along with the course close with the list, then show all the values. So here we had all Mm. the values. Okay. So basically, if we using drop duplicate, we can see this duplicate records, but it won't gonna be drop now. We have to write something, right, for dropping this record. Yes. So It this will is, only. yes, for example, this gender and course. With respect to gender and course, if anything is duplicate, anything is repeating itself, Mhm. then this would be the this would drop. It will skip that rows. It's combination you are saying, right? Yes. Gender and name, Yes. अच्छा, gender and अगर course. मान लीजिए हमें इन दोनों को ही कॉलम को ही प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे? जैसे क्वेश्चन है कि आपको केवल जेंडर और कोर्स को ही प्रिंट करना So उसमें select डालेंगे. हाँ. है. So we will be using df dot select. Hmm. Inside this select क्या होगा? I can put the column name df dot Yes, df dot ये दोनों जेंडर एंड and कोर्स course. बोथ Hmm. टू डिस्प्ले शो. Hmm. ठीक है. Can we use count function here with the Mm, select? yes, I think It's showing 1002. two. ठीक है. बट यहाँ पर ये वैल्यूज जो है केवल इसके साथ में है, Mm. लेकिन यहाँ पर आप देखो कितनी वैल्यूज है. Mm. इट्स गोइंग टू ड्रॉप ऑल द डुप्लीकेट्स. So it is dropping, right?
Or Yes. so again, if we show, then it won't like it's already dropped. नहीं, इसने यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुआ है डुप्लीकेट्स, यहाँ पे तो ओरिजिनल दिखा रहा है। हाँ। बट यहाँ पर ड्रॉप हुआ है कि अगर वैल्यूज हमारी यहाँ पर जेंडर और कोर्स के साथ में रिपीट हो रही हैं रो में किसी भी, तब वो उसको ड्रॉप कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, इस डेटा फ्रेम में ये ड्रॉप डुप्लीकेट्स ओनली लाइक सेलेक्ट कर रहा है कि फैचिंग द रिकॉर्ड्स दीज आर द डुप्लीकेट्स, और डुप्लीकेट हटा के दिखा रहा है। डुप्लीकेट हटा के दिखा रहा है, तभी तो इतना कम लेकिन दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में डेटा फ्रेम में अपडेट नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं, एक्चुअल में नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक्चुअल अगर में, एक्चुअल में कैसे होगा? अगर जैसे अब आप देखो कि df डॉट शो, एक्चुअल तो हमारा ये है हम्म, पूरा सारा मिला करके, हम्म, पूरा आप और भी देखोगे तो ये शो 100 और जितने भी हैं वो हमारे सारे दिखाएगा। हम्म। नहीं, अगर मुझे ड्रॉप ही करना है उसमें से उसमें से ड्रॉप करना है ना, तो मैं आपको, ये आपने लिखा शो 100 कॉमा अंकित इज इक्वल टू 2, हम्म, तो ये showing all the values। लेकिन कॉलम नेम देना पड़ेगा ना उसमें। column name of truncate is equal to false false। without the code। अभी ये सारी वैल्यूज को शो कर रहा है। इट्स कंसिस्टिंग ऑल दी वैल्यू, ओरिजिनल जो हमें सीएसवी से उठाया है हमने उसको शो कर रहा है। हम्म, बट अगर मैं आपको यहाँ पर df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स लिखूंगा, नाउ दिस df हैज बीन अपडेटेड, हम्म, यू विल शो कि टॉप 25, मैं अगर लिखूं तो टॉप 25 है ही नहीं। तो काम करता हूँ तरीके से, हम्म, which is updated। So this assignment is necessary जो लेफ्ट हैंड साइड में की। हम्म, विदाउट दिस असाइनमेंट इट विल जस्ट डिस्प्ले, या हम्म, वो जब जो आपको जैसे आपको बस ये दिखा देगा कि आप इसमें अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, हम्म, नॉट मेकिंग चेंजेस। मतलब फैच कर रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। हम्म, जस्ट डिस्प्ले कर रहा है कि ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर है। हम्म, Okay, so this was the drop duplicates and this was the showing the maximum value, and let's distinct समझ में आ गया, हमने distinct देखा, then we हम्म, had seen the drop duplicates। For example, we had drop duplicates with the age, gender and codes, so we can drop duplicates with each value, हम्म, so that df3 is going to drop all only 14 column rows are there हम्म, with respect to age, gender and codes। ओके। So this is the, okay, now I'm going to sort all, sort certain rows। How to sort certain rows? Yeah, certain column, I would say certain column। Short is the function, right? हाँ। Yes, df dot sort हम्म, in column, so df dot marks, then to show this part। हम्म। So marks, So it's showing ascending order, descending order, it's ascending order। ascending order।
I want to show in the descending order. Mm, then Put the desc PySpark .sql functions. import. Have to import. So let's try without importing this one. Will it throw error? So I'm going to use this sort. Inside this sort, If we put like -1, then will it work or no? just wait. Mm, Marks, sc, oh, so df dot sort sc. Can you see? dsc is not defined. Why? Because we will have to import this value. mhm. Okay. So first I need to have to import this function. This is the dsc, and then I'm going to rerun this part. Can you see? Not showing descending order. Was Mm, 96, 93. Previously it was 32, 35 till 83, 96. Now we have 96 till null. mm, okay. So can we have two different columns? Let's say, can we have marks and A's both? दोनों का sorting order कर सकते हैं हम. हो जाएगा. So DSC along with A's, and but यहाँ पे आप देखो A's 29, 38 ऐसे करके यहाँ आया, but 29 यहाँ पे भी है, 29 यहाँ पे भी है. Why it's not showing in a descending order? Mm, no, open order by marks. Mm, ये फर्स्ट वाला ही लेगा ना एक्चुअली, या फिर फर्स्ट क्या कर रहा है, ये फर्स्ट सॉर्ट कर रहा है मार्क्स को. मार्क्स के बेसिस पे? हाँ. देन अगर उसपे कोई डुप्लीकेट है, देन उसका सब डोमेन बना के तब डीएससी के जो एज कॉलम है उसको सॉर्ट करेगा. हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्सेल की शीट में भी अगर ये परफॉर्म करते हो, तो वो भी हाँ. सेम तरीके से काम करेगा. जैसे कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है. लेट्स से दिस इज द सिटी and this area. Here we had Delhi, Delhi, Goa. Now we had five, five, five. So you will have to sort this value. तो हम्म, ये अगर सॉर्ट होगा, हम्म, तो पहले दिल्ली को एक अपने, अगर इसको हम सॉर्ट करने के बाद में दोनों को एक साथ सॉर्ट करेंगे कॉलम को, देन इट विल बी लाइक दिस वन. फर्स्ट दिल्ली अगर होगा, देन नेक्स्ट वुड बी दी दिल्ली. फिर अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सो दिस वुड बी 25 एंड 35. हम्म, देन वी विल हैव मुंबई, हैव अगेन मुंबई. देन मुंबई के केस में जो डिसेंडिंग ऑर्डर है 60 एंड देन 25 विद रेस्पेक्ट टू मुंबई, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलाए गए हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम जब दो एक साथ में ले रहे हैं तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करता है. दिस इज यूनिवर्सली ट्रू इन पावर बीआई, इन एक्सेल, इन टैबलो, एवरीवेयर दिस कॉन्सेप्ट इज सेम. अब गोवा का हमने सॉर्ट किया तो पहले ये 65 लेगा एंड देन 35 लेगा.
दिस इज द रीजन कि वो हमें वहां पर सेकंड रो में वो वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है जो सॉर्टेड है, कि फर्स्ट वो फर्स्ट को डोमेन बना रहा है, देन नेक्स्ट को वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहा है। हियर वी हैड प्रोवाइडेड द डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग किसके रेस्पेक्ट में है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट, नॉट द एरिया कॉलम अपने आप में डिसेंडिंग entirely। अगर आप इंडिविजुअली एरिया कॉलम को देखोगे देन इट्स नॉट शोइंग द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होता है किसी में भी, चाहे आप पावर बीआई में कर रहे हो या टैबलो में कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो, और पेंडास में भी कर रहे हो, पाइथन, पाईस्पार्क, सीक्वल में भी यही कॉन्सेप्ट है। सीक्वल में भी हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं चीजों को कि अगर आप दो डिसेंडिंग या दो असेंडिंग एक साथ में कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाई इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन। Okay. We can also use df dot order by using the marks showing output sorted on. Mm. So we can also use ascending and descending outside the concept. For example, df dot marks dot ascending. Previously we used like ascending and descending surrounding the columns, descending और क्या आपको column use करना है, but we can use the df dot marks dot ascending, df dot age dot descending. So this Mm. is also acceptable. It's connecting. Yes. Let's say we do not have integer column in our data frame or wrongly read, रीड गलत किया है, बट वो कॉलम जो है वो हमारा वो है इंटीजर है या डबल है, तो Mm-hmm. वी हैव टू परफॉर्म द टाइप कास्टिंग, या इंपोर्ट करते समय हमने इन्फर स्कीमा नहीं लगाया हुआ है, Mm. तो हमें कैसे रनिंग स्टेट में, या हमारा कोड 500 कोड लाइन के आगे चला गया है या 300 लाइन के आगे चला गया है या कहीं और से आ रहा है, तो अब हमें उसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो वी कैन यूज df इज इक्वल टू df डॉट विद कॉलम, और विद कॉलम के साथ में हमें मान लीजिए मार्क्स को, अभी तो हमारा है लेकिन हमें मार्क्स मिला नहीं उसमें इंटीजर फॉर्मेट पे, तो वी Mm-hmm. नीड टू चेंज दिस स्ट्रिंग टू इंटीजर। So this is the column which we need to convert into the integer. So marks, then we will using dot cast, और cast जो लिया गया है वो type casting concept, Mm. can use the df dot, so why I'm just assigning this df equals to, it will override the existing df data frame, Okay. so it will help you to convert to cast particular column, Mm-hmm. how to create integer column। अगर ये इनिशियल में इंटीजर या आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं मिला है, इन स्ट्रिंग इंटीजर या डबल फॉर्मेट में लिखा है, तो रनिंग टाइम पे भी हम उसको बाई, नेक्स्ट टॉपिक इज बाई। तो let's talk about any issue that have come up since, any code, any No. question। No.
So the next topic in this series is group by, where we are going to focus on certain columns. Mm. df dot group, By and I'm going to column name. column name is gender. So Then gender is consisting male, female, and null. mm, So gender with sum. Want to give some mathematical operation. marks. This one is the marks and show. Mm, So if why I have displayed this option, अगर ये आपका string format में है marks का value और mm, यहाँ पर आप उसे sum कराने की कोशिश कर रहे हैं, then ये वहाँ पर halt कर देगा, आपको error दिखा देगा कि भाई mm, आपका जो string है वो sum नहीं कर सकता. mm, You can think about this idea. This column marks is string type and we are going to calculate sum of these string value. तो वो mm. वहीं पर एरर दिखा देगा. This is the reason this step is sometimes necessary. और अगर हम लोग यहीं पर लिख दे मार्क्स का फंक्शन, मार्क्स के अंदर फंक्शन लगा के, तो मैथ्स के अंदर फंक्शन लगा के मतलब सम में फंक्शन लगा के टाइप कास्ट का नहीं इंटीजर क्या? का टाइप का उसका हाँ, आई डोंट आई नेवर सी. ओके. वी कैन ट्राई. तो df dot group by, and here it's showing female 390, male 316, and male. So because we do not have any value here in between male and male with respect to, so it's showing null. And you want me to show that part. Okay, so let's, for this operation, this research, we will have to go up where we had imported this entire file, working or not, to get wrong, spelling wrong. Going to say schema, make sure every column is a string. Let's get a new it, and want me to convert integer here. Invalid integer base. Anything else you want to make changes here? No, cast type casting if we use, Okay, or yeah. not sure whether it will want me to dot cast. Mm, Cast, but इसको पता कैसे चलेगा हाँ, कि वही तो. sum? नहीं, वो पहले ही कास्ट लगाएंगे, तो उसमें अगर सम लेके अगर कास्ट लगाए तो, या फिर मार्क्स. कैसे? ये जो सम है इसके अच्छा, इसमें ये ब्रैकेट ओपन पहले. करो. हाँ, कास्ट लगाओ और फिर एक कास्ट लगा के, और फिर अगर ब्रैकेट में मार्क्स डाले तो. हाँ, अभी यहाँ मार्क्स डालिए. हाँ, और दो. हाँ, अब इसको क्लोज कीजिए. हाँ, तो रन अभी. कराऊं? नहीं नहीं, ये मार्क्स तो हटा सकते हैं ना. हाँ हाँ. हाँ, ओके, देन आया. हाँ, बट हमने अभी. इंटीजर कहाँ दिया? इसको इंटीजर में कन्वर्ट. व्हाट्स योर चॉइस? व्हाट्स योर नहीं. टारगेट कॉलम? नो नो, ये कैसा रहता है ना कि कास्ट, या फिर जैसे अपन टाइप कास्टिंग जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली लेता है, मतलब कि अगर ये जो मार्क्स. अच्छा. रेस्पेक्टिव उसका वो है. हाँ. तो जी. नहीं कास्ट, सर. सम के अंदर कास्ट एक्सेप्टेबल है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, वेदर इट इज हम्म. एक्सेप्टिंग, हम्म. वेदर दिस सम इज, मे बी, अगर मे बी इन अपकमिंग वर्जन में ये इसको अपडेट कर देंगे, ये लेगा, तो मे बी आफ्टर सम वर्जन इट मे बी एक्सेप्टेबल, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट टेकिंग. ओके. क्योंकि मेरे ख्याल से एसक्यूएल में टाइप कास्टिंग लगाते हैं. एसक्यूएल टाइप कास्ट. ओके, तो ग्रुप बाई, ओ
Now we have using group by we can make other changes. So df dot group by using the gender the count. So we Mm. had seen count the get function. This is the AV. So this is the marks. Then to display this marks in this is the average. Mm. A proper string and double. This marks. Mm. So can we have other functions? Copy same word, same keyword, and with the AVs going to take mean value and mean standard mean value also. But mean is not defined here. Why? Because I'll have to import this. So from PySpark dot build dot functions put some place next in mean count. Mm. Marks is now we have proper. Any doubt on it? This No, 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 no. so we can have more function. Okay, so can we till now we had work on CSV files and structure format. Mm. Now let's move to text file. Let's take an example of text file as well. हमें कोई टेक्स्ट फाइल जैसे एनएलपी के बेसिस पे हमें कभी कभी मिल जाती है Mm. तो टेक्स्ट फाइल में हमें बस spark dot text function. Inside this text, I'll have to import a file which is consisting text dataset. Mm. So download the word data. This word data is consisting all the apple, mic, laptop, chair, book, chair. So many keywords are there. Mm. Just- So I'm going to import this file in my code word data and copy this path, paste it here in text. Mm. Will import my text Mm. file. Now let's display this text file. Is going to display. So what is the value here? The value refers to.
default column name while reading the Just a minute. value refers, which is showing here. It is the default column name that PySpark assigns when reading a file using .text method. Okay, so what is the meaning of text file here? This value refers to the default column name PySpark assigns reading this text file. So df contains a data frame where each row is a line file word.txt and line is stored in a column value. So this is the reason we are showing this text value here. So this text value will be there to represent all the values on the respective keywords here. So every time you will display all these text value, so it will show this context. Let's say I'm going to display some group by. So df equals df dot group by, and with this group by value, so I can apply group by function over this value column. So this is going to count dot show. Let's say what's the output here? So this dot count group by. So here we had 10 quantity of mic, 15 quantity of chair, 5 quantity of book, 5 quantity of laptop, 5 quantity bag, 5 mobile, 10 apple, and so on. So this is the specific reason that we need value column. By default, it's assigning value column to the text file every time. So this is all about this session, day 7 advanced function in Spark. In the next session, we will continue with more methods and more assignment of this PySpark. Thank you so much for joining.